Now this is a video series on lambdas in Java. ये एक वीडियो सीरीज है काय के बारे में, lambdas के बारे में, जावा में काफी इन डेप्थ सीरीज है। इस सीरीज में हम सबसे पहले काय से स्टार्ट करेंगे, इंट्रोडक्शन टू लैम्डा से, कि भाई लैम्डा की जरूरत क्या है, व्हाट इज द नीड ऑफ लैम्डास इन जावा। Followed by the introduction to lambdas, we'll move on to the lambda fundamentals. Fundamentals में I'll be covering two things. I'll be covering lambda expressions and functional interface. मैं दो चीजों के बारे में बात करूंगा, lambda expressions के बारे में और functional interface के बारे में. Now, followed by fundamentals, we are going to talk about the syntax and examples. We'll implement lambda expressions. Lambda expressions दो तरह के होते हैं, single line and block. We'll be implementing single line and block lambda expressions in examples along with functional interfaces. We'll see how to pass lambda expressions as an argument. अभी मैं थोड़ी देर में या कमिंग वीडियो में बताऊंगा कि भाई कि lambda का एक्चुअल यूज है passing executable code as an argument. So this is one of the key feature of lambda. How to pass lambda expression as argument. अगर आपको lambda expression को फंक्शन में arguments भेजना है तो किस तरह से आप उसको भेज सकते हो। उसके बाद हम क्या की बात करेंगे, मेथड रेफरेंस। मेथड रेफरेंस के अंदर we'll talk about method reference to constructors, method reference to static methods and method reference to instance methods. इसके बाद हम देखेंगे कुछ बने बनाए फंक्शनल इंटरफेसेस, प्रीडिफाइंड फंक्शनल इंटरफेसेस। जावा 8 comes along with many predefined built-in functional interfaces. ये कौन कौन से हम इनको देखेंगे, we'll implement them in examples. And finally, we'll move on to the interview questions. Lambda is an important topic in interviews these days. आपको majority बहुत सारे lambda के questions आएंगे interview वगैरह में, तो we'll talk about some of the interview questions. So these are the things that I'm going to cover in this in-depth series on lambdas in Java.